Hello students, good morning to all. Today we will discuss another important topic of chapter gravitation, that is buoyancy and Archimedes principle. Now first we will define what is buoyancy. Now as you can see in this slide, what is buoyancy? It is the tendency of the liquid to apply an upward force on the object. See, whenever any object is immersed in a fluid may be liquid or it may be gas. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे फ्लूइड में इमर्स करेंगे then two forces act on that object. One is the gravitational force, that is weight of the object, and second is buoyant force. So the upward force that act on the object is known as buoyant force, or it is also known as upthrust. Now there is an experiment to show, suppose you take a balloon and you try to immerse that balloon into the water. As soon as you leave it, it will come up with a force. तो ये ऊपर की तरफ आएगा. तो जैसे ही आप बलून को इमर्स करोगे, अंदर लिक्विड में पुश करोगे एंड यू रिमूव योर हैंड and it will come up suddenly. So why it come up suddenly? Because an upward force is acting on that balloon, and that upward force is known as upthrust, or it is known as buoyant force. Now see here in this diagram, you can see I have shown 4 experiments. First is a spring balance. The weight of a substance is taken. Suppose this is iron bar, and the weight of this iron bar is taken on a spring balance, and it comes out to be 180 gram. Now when this iron bar is immersed in a liquid, then its weight, if it is taken on a spring balance, it come out to be 170 gram. So a small part of this weight, or this small part of this box is immersed in the liquid, and its weight decreases to 170 gram. तो 180 से 170 ग्राम हो गया जैसे उसे वाटर में या लिक्विड में इमर्स किया. उसे और ज़्यादा इमर्स किया. सी यहाँ पर जो पार्ट है, इमर्स्ड पार्ट इन द लिक्विड, दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 2. तो जैसे ही और उसे अंदर पुश करेंगे, उसका वेट और कम हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 150 ग्राम. एंड ये वेट कहाँ पर आ रहे हैं? दीज वेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस. इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट्स, द होल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड इट्स वेट कम आउट टू बी 140. मतलब और ज़्यादा डिक्रीज हो गया. सो एज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड इंक्रीजेज, its weight goes on decreasing, and when it is fully immersed, its weight is 140 gram. उसका वेट है 140 ग्राम. उसे और ज़्यादा अंदर पुश करोगे तो उसका वेट चेंज नहीं होगा, वो इट विल रिमेन 140 ग्राम. सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? See, when more and more volume of the object is immersed in water, then its weight is continuously decreasing. We have just observed in the experiment. Second, maximum change in weight is attained when full volume of the object is immersed. जब उसे पूरा इमर्स कर दिया तो मैक्सिमम चेंज आया, और जो मैक्सिमम चेंज था, the weight that was recorded is 140 gram. Weight reduction takes place. Now why does this weight decreases? The reason is there is a upward force acting on this object, और वो जितना ज़्यादा पार्ट उसका इमर्स करेंगे लिक्विड में, उतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, बिकॉज द buoyant force applied on the object is directly proportional to the amount of the liquid displaced. तो जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा उतना उसका वेट जो है वो कम होता जाएगा. सो वेट रिडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू अपवर्ड फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड कॉल्ड buoyant force. Now let us define Archimedes principle of flotation. Archimedes says that the buoyant force acting on any submerged object, कोई भी object अगर liquid में immerse है और gas में immerse है, means if an object is immersed in a fluid, the buoyant force acting on that object is equal to the weight of the displaced liquid. जितना ज़्यादा liquid displace होगा उतना ज़्यादा upward force लगेगा उस object पर. That is the Archimedes principle of flotation.
Now, when does an object float or sink? एक कोई भी object है, you have observed when you put a cork on the water, it will float. But when you put a wooden piece on water, it will sink. So, why does an object float or sink? The answer is given by Archimedes principle. According to this, there are two forces acting. One is gravitational force, another one is buoyant force. Now objects of density less than that of liquid float on the liquid. अगर object की density liquid से कम है, then it will float on the liquid. And if the density of the object is more than that of a liquid, it will sink, because the weight of the water displaced will be less if the density of the object is high. अगर object की density ज़्यादा है तो वो sink करेगा, अगर object की density water से कम है तो वो float करेगा. Now applications of Archimedes principle. See, it is used in hot air balloons, it is used in making ships and submarines. In this diagram you can see it is used in designing the ships and submarines. How? उसका शेप इस तरह से बनाया जाता है. शेप इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे, इट्स शेप इज गिवन इन सच ए वे कि उसका लोअर शेप इस तरह से होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वो मैक्सिमम हो जाए. और जब वो मैक्सिमम होगा तो बॉयंट फोर्स जो लगेगा, अपवर्ड फोर्स, दैट विल बी मोर एंड इट विल फ्लोट ओवर द वाटर. बट इफ़ यू टेक the equal mass of iron piece and you put it in water, it will sink. But अगर उसे एक particular shape दे दिया जाए, जैसे ship का shape होता है, then it will float because the amount of water displaced will be more in this particular shape. Now in submarine is provided with large tanks both at the front and the back. ये बैक टैंक है और एक फ्रंट टैंक है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टैंक्स? सी, इफ़ द टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर, इस टैंक में एयर भी फिल कर सकते हैं, वाटर भी फिल कर सकते हैं. इफ़ द टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर, द वेट ऑफ द शिप इंक्रीजेज एंड इट सिंक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो अगर इस टैंक में वाटर फिल है, then the weight will be more and it will go down into the water or it will sink according to the requirement. But if this water is replaced by air, if the water from the tank is pumped out by forcing compressed air, means water की जगह अगर air fill करते हैं, then ship will become lighter and it will rise up and it will float on the surface. So according to the requirement, the submarines can float over the surface of water or they can go down into the water. This principle is also used in lactometers and hydrometer. Lactometers are used to determine the purity of the sample of the milk and hydrometer is used to determine the density of a liquid. तो इन दोनों चीज़ों में भी Archimedes principle यूज़ होता है. That's all in this video. We'll discuss the next topic, relative density, in the next session. Thank you.